इमरान हाशमी ने एक इंटरव्यू में कहा how he doesn't regret doing any of his past films. In fact, he also goes on to say that what he is today is because of certain films. Well, needless to say कि इमरान हाशमी का जो जॉनर रहा है वो ज़्यादा हॉरर रहा है एंड ऑब्वियसली एरोटिक ड्रामाज उन्होंने बहुत किए हैं बट अपार्ट फ्रॉम दिस आई वांट टू नो कि ऑडियंसेस उन्हें और किस तरह के फ्लेवर्स में रोल्स में देखना चाहते हैं. सो हियर्स अ क्वेश्चन फॉर यू, किस तरह के जॉनर में अब आप देखना चाहेंगे इमरान हाशमी को, किस तरह के रोल्स में देखना चाहेंगे? टेल अस इन द कमेंट्स बिलो बिकॉज वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू. एंड नाउ वेल टॉकिंग अबाउट इमरान हाशमी, ऑफ कोर्स अगर एक एक्टर जिनका करियर डेकेड एंड हाफ से भी ज़्यादा चला है तो कुछ तो बात उनमें होगी ही. एंड ऑफ लेट काफ़ी बार सुनने को मिलता है, जैसे राजकुमार राव ने रिसेंटली कहा था दैट या देयर वर सम फिल्म्स जो मैंने इमोशनल रीज़न की वजह से कर ली थी एंड ही वाजंट टू हैप्पी अबाउट मेकिंग दोज चॉइसेस इन हिज करियर. Right, so I'm sure that there are certain movies that you do for different reasons. वहीं इमरान हाशमी ने exactly क्या कहा, पहले वो सुनते हैं. He said, I am proud of whatever I have done. I don't have any regrets. What I am today is because of certain films. I gained from that kind of cinema. There are many films which you feel were not made for you or were not made as they should have been. But that's a learning process. How will you grow if you do not make those mistakes? You have to do justice to whatever comes your way. You have to work hard and reinvent yourself. And I feel like, of course, ये तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि जब आप एक स्क्रिप्ट को हाँ बोलते हैं, किसी डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को हाँ बोलते हैं, यू थिंक आफ्टर रीडिंग द स्क्रिप्ट कि ये मूवी इस तरह से होने वाली है या इस तरह से दिखाई जाएगी, बट देन इट डजंट ऑलवेज एंड अप टू बी द सेम प्रोडक्ट विद योर सेंसिबिलिटीज इन प्लेस. बट देन आई फील लाइक वो रिग्रेट जरूर दिखता है उनका कि कुछ मूवीज ऐसी थी, बट दैट्स ऑल्सो प्रोसेस विच अ लॉट ऑफ एक्टर्स हैव गॉन थ्रू. Of course, I mean it's a learning process and it doesn't matter whether you come from a filmy background or not. As an individual, आप जो choices करते हैं, लेते हैं अपने career में, that is what reflects, in the future of your career. And also, I wouldn't say कि इमरान हाशमी ने कभी कोई experiment नहीं किया है. He's done films where he's played gangster. He's also done movies like Dirty Picture. And off late जब उनकी series आई थी, उसमें भी काफ़ी बार उनको एक्शन करते हुए देखा गया. एंड आई थिंक इट्स द फर्स्ट टाइम ही इज एक्चुअली गॉन आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन फ्रॉम जस्ट बीइंग ड्रामेटिक, जस्ट बीइंग एन एक्टर to becoming someone who's doing a lot of action. Right. And I think he's been somebody who has taken, his career in parts. Like, you could also see him grow as a person. जैसे कि उन्होंने खुद का कहना है कि right after his son was born, or after the struggle with the cancer that his son was going through, उसके बाद जो उनका perspective है, भले वो movies को लेकर हो या life को लेकर हो, वो बदला है. And you can also see that sort of, transpire into his work. Like you said, he has not shied away from reinventing yourself. He's also said that he's proud of the fact that he has reinvented himself. He has known that cinema is changing, stories are changing, the times are changing, and उस तरह से आपका भी craft बदलता है. And I think we can definitely give that to him, that he has definitely changed with the times and sort of embodied the nice and let go of whatever wasn't working for him. Yeah, the bad boy image that he used to have. Also, there was another thing that he said, that he's not इनसिक्योर अबाउट द फैक्ट कि कितने सारे लोग इंडस्ट्री में आ रहे हैं या मुझे काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहीं वो स्टैग्नेशन पॉइंट तो नहीं आ रहा है, विच इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग टू से. बिकॉज आज के ज़माने में जब बहुत सारे एक्टर्स की कंप्लेन होती है दैट वी स्ट्रगल टू फाइंड गुड स्क्रिप्ट्स फॉर अस, ही वेरी ओपनली सेड दैट इफ आई फाइंड अ स्क्रिप्ट फॉर माई सेल्फ आई कैन डेफिनेटली प्रोड्यूस अ फिल्म बिकॉज आई ऑल्सो एम अ प्रोड्यूसर एंड हैव माई ओन प्रोडक्शन हाउस. सो आई थिंक टॉकिंग अबाउट इमरान हाशमी डूइंग एक्सपेरिमेंटल सिनेमा, probably it's going to be seen in the near future. Well, we're hoping that with that kind of change in this kind of cinema that he starts doing, his son might also start getting exposed to the work he actually does, because जैसे उन्होंने खुद कहा, his son is 9 and all his movies are censored, so definitely he hasn't been seen much of his movies, much of his work. But I think also for Emraan Hashmi more so, क्योंकि that Cyril kisser tag, like he's been known that some of his initial movies, he became Emraan Hashmi because of that. And he's very right when he said that his movies gave him that sort of recognition, and then he had to break away from that. Or Rishita, we know that especially in an industry like ours, it's so hard
to break the stereotype, especially a stereotype that gives you the success that you've achieved. You know. Of course, you're making a very valid point, Gunjan, because आपका करियर जिस चीज़ की वजह से ज़्यादा उठा है, जिसने आपको सबसे ज़्यादा पॉपुलर बनाया है, and well has given you the title of serial kisser, breaking away from that, वो stereotype तोड़ना, you know, breaking the mold and doing something new constantly, and as he keeps saying, reinventing yourself is definitely a very difficult thing to do. But again, as I said earlier, there is a lot more that we can see coming from Emraan Hashmi. Watch Planet Bollywood from Monday to Friday at 9 p.m. only on Zoom.